Good morning, children. How are you? All are good? Well done. Students, we were learning chapter 3 parts of a plant and their function. And the previous videos, you all have learned the parts of plants such as root, stem, leaf, flower, fruit, and a little about seed. Am I right? Now in this video, we will learn about the structure of seed and we will know how does a seed grow into a new baby plant. So first we see the structure of a seed. तो सबसे पहले ये बताओ सीड होता क्या है? Yes, a seed is the part of a plant from which a new plant usually grows. सीड प्लांट का वह पार्ट होता है जिससे न्यू बेबी प्लांट ग्रो करता है. और सीड को प्रोटेक्ट करके कौन रखता है? यस, फ्रूट प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि फ्रूट के अंदर ही सीड्स होते हैं, राइट? और जब कोई फ्रूट पक जाता है तो हम फ्रूट को खा लेते हैं और सीड को कहीं भी फेंक देते हैं, राइट? और जहाँ भी हम सीड को फेंकते हैं वहीं से एक न्यू प्लांट उग जाता है. वी सी देयर आर वैरायटी इन सीड्स. हम सीड्स में वैरायटी देखते हैं. सभी सीड एक जैसे होते हैं क्या? नहीं होते. सारे सीड अलग अलग होते हैं. सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, उनकी साइज़ डिफरेंट होती है, उनका कलर डिफरेंट होता है. जैसे अगर आप वाटरमेलन के सीड्स देखोगे तो कितने सीड्स होते हैं वाटरमेलन में? बहुत सारे सीड्स होते हैं. किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं. साइज़ कैसी होती है? बहुत छोटी होती है, ठीक है ना. लेकिन अगर आप मैंगो के सीड को देखोगे तो कैसी होती है? कितने सीड होते हैं उसमें? एक ही सीड होता है, ठीक है. और साइज़ कैसी होती है? बड़ा होता है, ठीक है. अगर आप पोमेग्रेनेट देखोगे, मतलब अनार के दाने देखोगे या द्राक्ष के दाने देखोगे, सीड्स देखोगे जो हम खाते हैं, कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं. पोमेग्रेनेट में कितने सीड्स होते हैं? बहुत सारे सीड्स होते हैं. और साइज़ कैसी होती है? स्मॉल साइज़ होती है, ठीक है. एप्पल देखोगे तो एप्पल में कितने सीड होते हैं? 2 to 4 होते हैं, ठीक है. 2 से 4 सीड होते हैं. कलर कैसा रहता है? ब्राउनिश कलर रहता है, ठीक है. ब्राउनिश ब्लैक कलर होता है. और साइज़ कैसी होती है? स्मॉल होती है. इसलिए देयर आर वैरायटी इन सीड्स. हम कह सकते हैं कि सीड्स सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है ना. अब कुछ सीड्स को हम खाते हैं और कुछ को नहीं खाते. खाने वाले सीड्स कौन कौन से हैं? जैसे हम व्हीट खाते हैं, गेहूँ खाते हो, राइस खाते हो, मस्टर्ड सीड खाते हो, क्यूमिन सीड खाते हो, क्लोव खाते हो या कार्डेमम या इलायची खाते हो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें सीड्स हैं जो हम खाते हैं. अब ऐसे सीड्स जो हम नहीं खाते वो कौन कौन से हैं? जैसे मैंगो सीड नहीं खाते, एप्पल, वाटरमेलन, चीकू, लेमन, आंवला, डेट या खजूर, इन सब के सीड्स हम नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है. तो ये हुए ईटेबल एंड नॉन ईटेबल सीड्स. अब अगर हम सीड्स के स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो जितने भी सीड्स आप देखोगे सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे. कुछ सीड्स आपको गोल दिखाई देंगे, कुछ किडनी शेप के दिखाई देंगे, कुछ ओवल दिखाई देंगे. अंडरस्टूड. अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम बीज से तोड़ें तो 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो बिल्कुल पाउडर जैसे बन जाएंगे या क्रश हो जाएंगे, ओके. जैसे आप काजू खाते हो तो काजू बीज से अलग हो जाता है कि नहीं होता? या फिर जब आप बादाम खाते हो तो जो सोक्ड बादाम होता है, रात में फुलो देते हो, सुबह खाते हो, तो सोक्ड बादाम भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है. लेकिन जब हम गेहूँ, चावल या मक्का या मेज इनको डिवाइड करेंगे तो वो पाउडर बन जाएंगे. अंडरस्टूड. इस चीज़ को हम और भी इजी वे में बोल सकते हैं. हम बोल सकते हैं किसी सीड में 2 दरवाजे होते हैं और किसी में एक ही दरवाज़ा होता है. सीड को बीज से तोड़ने पर अगर वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब उसके 2 दरवाजे बन जाते हैं, तो इसे हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कॉटिलिडन, ओके. लेकिन 2 कॉटिलिडन है इसलिए हम क्या बोलेंगे? डाई कॉटिलिडन. अंडरस्टूड. जैसे काजू, बादाम और चना. लेकिन अगर किसी सीड को तोड़ने पर
वो पाउडर बन जाता है, उसके दो इक्वल पार्ट्स नहीं होते हैं, तब हम उसे क्या बोलेंगे कि उसमें सिर्फ एक दरवाजा है, और इसे साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? मोनोकोटिलिडन। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. There are three main parts of a seed. These are seed coat, embryo and cotyledons. Seed coat means the outer covering of the seed which protect the embryo. This is called seed coat. The second part is called embryo. Embryo मतलब हमने क्या बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में? बेबी प्लांट, राइट? तो एम्ब्रियो क्या होता है? बेबी प्लांट. इट कंसिस्ट ऑफ द यंग रूट एंड शूट. सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है जो बिल्कुल पॉइंट जैसा छोटा सा होता है, ठीक है. अभी उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं बनी होती है, बिल्कुल छोटा सा रहता है वो. और जब इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है तो क्या ये अपना खाना खुद बना सकता है? नहीं बना सकता, ठीक है. तो इसे फूड कहाँ से मिलता है? सीड से, राइट. जब हम सीड को नीचे सॉइल में लगा देते हैं तब ये बेबी प्लांट मतलब एम्ब्रियो धीरे से बड़ा होता है और फिर इसमें दो पार्ट्स बन जाते हैं. एक बनता है रेडिकल और दूसरा बनता है प्लूम्यूल. अब रेडिकल से रूट बन जाती है और प्लूम्यूल से स्टेम बन जाता है. ओके, यू कैन सी द एम्ब्रियो इन द फॉलोइंग वीडियो that I will show you. First we see the third part of the seed. This is cotyledon. Cotyledons contain food for the baby plant. The young plant uses this food until it is large enough to make its own food. अभी मैंने आपको बताया था कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, बेबी प्लांट होता है, वो बहुत छोटा होता है, अपना फूड खुद नहीं बना सकता. इसीलिए इसको फूड कहाँ से मिलता है? कोटिलिडन से. सो दीज आर द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ अ सीड: सीड कोट, एम्ब्रियो एंड कोटिलिडन्स. अंडरस्टूड? Let's see a video. The structure of a seed. The seed is a reproductive structure that has a baby plant inside it. And also, it has food stored for the growth of the baby plant. The hard outer cover that protects the baby plant inside is called testa. The part of the seed inside the testa that stores food for the tiny baby plant until the baby plant starts producing its own food by photosynthesis is called cotyledon or cotyledons, and there can be one or two cotyledons. The tiny baby plant inside the seed is called embryo. Embryo has two parts, radicle and plumule. The radicle is an embryonic root which grows and develops into the root system of the plant. And the plumule is an embryonic shoot that grows and develops into the shoot of the plant. This is a soaked bean seed. It has hard outer covering which is called testa. Then now open the bean seed into two halves, and you will see two halves that are called cotyledons, or seed leaves. They contain food for the baby plant. Now, the seed coat can be separated. Between the two cotyledons lies the embryo. The radicle is an embryonic root which grows and develops into the root system of the plant. And the plumule is an embryonic shoot that grows and develops into the shoot of the plant. Kids, we learned various parts of the bean seed, which is a dicot. That is, has two cotyledons. Beans, chickpeas, gram, peas have two cotyledons and are known as dicots. And there are also seeds with one cotyledon, and they are known as monocots. Maize, wheat, and rice have one cotyledon, so are called monocots. So kids, today we learned a lot about the structure of a seed. Did you understand the structure of a seed?
Okay. Now let's see how does a seed grow into a new baby plant. So first you tell me, what does a seed need to grow? सीड को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए? यस, सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड एयर, राइट? लेट्स एंजॉय द वीडियो. Some of the seeds you can eat while some you cannot. Also, there are some which you should not eat. Seeds vary in size, shape, and texture. Some seeds like flax seeds, peanuts, and sesame can be eaten raw. Some seeds like kidney beans, Bengal gram, corn, rice, and pulses need to be cooked before eating. From seed to plant. Now, let us see how seed grows into a plant. The dry seed absorbs water and swells out. As the seed swells, the seed coat splits and a small white structure comes out. This is called the radicle. The radicle grows downwards into the root. The seed coat opens completely and the plumule is exposed. This grows upwards. The water and nutrients for the plant are absorbed by the roots that have grown out of the seed. The cotyledons begin to shrink. The seed slowly turns into a seedling. The cotyledons disappear and the little plant is able to entirely support itself and grow on its own. The growth of a seed into a young plant is called germination. A seed germinates only when the conditions are favorable. It needs the presence of water, oxygen, warmth, and sunlight to germinate. I hope you have enjoyed the video and learned about the germination. Can you define what is germination? Yes, the process of development of a new plant from a seed is called germination. Tell me, is it clear to you? Okay, now the chapter is completed. If you have any doubt, any query, so you can ask me. Understood? Now here is a homeland for you. You have to draw a beautiful picture of a seed and label its all parts. Is it clear? Okay, thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe. Bye.